So after the dissection of the parotid region, you will be dissecting one very important region, and that is infratemporal fossa. There are two fossae on the side. In norma lateralis you may have studied it. One is temporal fossa. Temporal fossa is this region, below the superior temporal lines, below the superior temporal lines. And then here is the zygomatic arch, right? Here is the zygomatic arch. Above the zygomatic arch is temporal fossa. Below the zygomatic arch, here is infratemporal fossa. But below the zygomatic arch, actually you will see the mandible. So this mandible will form the lateral boundary of the infratemporal fossa. So here will be temporal fossa, which will communicate with the infratemporal fossa through the zygomatic arch. So here will be the infratemporal fossa, where my fingers are. This is the location of infratemporal fossa. The lateral boundary of the infratemporal fossa will be mandible. Mandible will be here. What will be the medial boundary? The pterygoid plates. The pterygoid plates will be the medial boundary. What will be there anteriorly? Anteriorly will be the maxilla. Maxilla. What will be there superiorly? Greater wing of sphenoid. See, this is the greater wing of sphenoid, which is going here and forming the roof of infratemporal fossa. What is there inferiorly? Inferiorly it is open. Inferiorly it is open. What is there on the posterior aspect? You can see the tympanic bone over here. Okay? What is there on the medial aspect? We already said the medial pterygoid plate. The pterygoid plates. Behind the pterygoid plates is pterygomaxillary fissure, through which the infratemporal fossa communicates with the pterygopalatine fossa. So here is infratemporal fossa. On the medial wall is pterygomaxillary fissure. Through that, if you go inside, you reach, you go inside matlab, if you put a wire, it reaches pterygopalatine fossa. Okay? Here in this, we see the four muscles of mastication. Mastication matlab chaba. Okay? Mastication. We see the nerve supplying them, that is the mandibular nerve. We see a artery, maxillary artery. We see the four muscles of mastication. But to be precise, if you ask me, I would say only the medial and the lateral pterygoid muscle, they are in the infratemporal fossa, because masseter is outside. Outside. And temporalis is in the temporal fossa. Its insertion is there in the infratemporal fossa. So let's start with the temporalis first. This is mandible, here is temporal fossa. From this temporal fossa takes origin the temporalis, and temporalis fibers go for its insertion on the coronoid process of the mandible. On the coronoid process of the mandible. Coronoid process of the mandible. Okay? View. You are looking at the side view. Here is temporalis muscle. This temporalis muscle sending fibers to coronoid process like this. There are two types of fibers. One
are vertical fibers. One are vertical fibers and two are horizontal fibers. Vertical fibers and horizontal fibers. Vertical fibers will cause elevation of the mandible. देखो ऐसे फाइबर कॉन्टैक्ट करेंगे elevation. So if you put your, everybody come on, put your fingers on the temple and do elevation of the mandible. You get a movement here. That is temporalis. Causes elevation of the mandible. Vertical fibers. Cunningham's textbook of anatomy, जिसको आप डिसेक्शन हॉल का एंट्री टिकट बोलते हो, जिसको आप डिसेक्शन हॉल का एंट्री टिकट बोलते हो, उसमें पिंक पोर्शन में हाउ टू डिसेक्ट है और वाइट पोर्शन में एनाटॉमी का डिस्क्रिप्शन है. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनाटॉमी. उसमें इट सेज वर्टिकल फाइबर्स एंड हॉरिजॉन्टल फाइबर्स. योर टेक्स्ट बुक सेज एंटीरियर फाइबर्स एंड पोस्टीरियर फाइबर्स. एक्चुअली बेस्ट इज वर्टिकल फाइबर्स एंड हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत एरोज निकाले दोनों जगह. वर्टिकल फाइबर्स विच कॉज एलिवेशन, दूसरे इसमें से निकाल रहा हूँ अभी, विल कॉज एलिवेशन, एंड हॉरिजॉन्टल फाइबर्स विल कॉज रिट्रैक्शन. प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल, रिट्रैक्शन. ऐसे आप लोग करते नहीं नॉर्मली. किसी को मुंह दिखाने का है, बंदर आपके सामने आ गया, मतलब वो जाली में है, अदरवाइज आप नहीं करोगे डेली. बाकी इधर उधर आप जाते हैं ना, यहाँ पे बंदर रहते हैं, हाँ, बट नॉर्मली बंदर रहते हैं. वृंदावन गए, मथुरा गए, तो उधर आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, इतना डेयरिंग नहीं करते. बट वो केज के अंदर है तो यू आर सेफ. बट अदरवाइज नॉर्मली प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन हैपेंस व्हाइल ईटिंग. एक साइड का प्रोट्रैक्शन, एक साइड का रिट्रैक्शन, एक साइड का प्रोट्रैक्शन. आपको समझता नहीं, आज खाना खाते समय ट्राई करो. हाँ, तो दैट रिट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय टेम्पोरलिस हॉरिजॉन्टल फाइबर्स. लेट्स गो वन बाय वन. The next muscle I will draw here only. वो जाइगोमा से आता है, वो जाइगोमा से आता है. उसके फाइबर्स ऐसे. This will cause elevation. इसका नाम है मैसेटर. एंगल ऑफ मैंडिबल पे जाके एक्सटर्नली, इट्स एक्सटर्नल. Starts from the zygoma. Origin zygoma. Insertion, insertion, mandible, ramus, outer surface near the angle. Action, elevation of the mandible. Action, elevation of the mandible. Rather, it's one of the strongest muscle. मतलब amongst these four ये सबसे strongest. मतलब आप आपका चीक बाइट करते हो, टंग बाइट होता है, इतना स्ट्रांग है ना उसका फोर्स. मोस्ट डेंजरस थिंग जिसके बारे में यू हैव टू बी कॉशियस. आपसे कम हाइट वाला आदमी आपके सामने डांस कर रहा है, कहीं आप गए रॉक कॉन्सर्ट, आप हाँ, और आपको गलती से टिकट मिल गया, आपको गलती से टिकट मिल गया, कोल्ड क्या है, कोल्ड प्लेट गलती से मिल गया, ऐसा ऐसा जस्ट इमेजिन करने को क्या फोटो. हाँ हाँ, तुम फोन कर, मैं लेक्चर नहीं वो. तो ये चिंटू आदमी जो रहता है ना, उनसे कभी भी दूर रहने, बिकॉज वो जोश में आके जंप मारेगा. और आपका टंग अगर ऐसा है, दैट द वर्स्ट थिंग. मतलब वो टुकड़ा लेके ही आपको जाना पड़ेगा फिर. फ्रॉम डीवाई पाटिल
सो वो टंग बीच में आ गया हाथ में, तो DY पाटिल स्टेडियम टू DY पाटिल हॉस्पिटल, वो ऐसे लेके, देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ यूनाइटिंग ऑल्सो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैसेटर उसमें जो अपने हम खुद भी बाइट कर ले. नाउ 2 more muscles. Now this is the lateral pterygoid plate. This is the lateral pterygoid plate anteriorly. From the lateral surface of the lateral pterygoid plate takes origin the lateral pterygoid muscle. From the medial surface takes medial pterygoid. Okay. Now the lateral pterygoid goes for its insertion. Goes for its insertion. Goes for its insertion on the pterygoid fovea. On the pterygoid fovea below the head of the mandible. On the pterygoid fovea. इसका एक्सिस यहाँ पे देखो, एक्सिस यहाँ पे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ये मैंडिबल है ऐसे, ये रेमस है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे इसका इंसर्शन है. ओके तो ये इसको खींचेगा. This is how lateral pterygoid opens the mouth. Only amongst these 4 muscles, this is the only muscle which opens the mouth. कैसे ओपन करता है? ये हेड को ऐसे खींचता है, आगे से आ रहा है, सो ये हेड को खींच रहा है. हेड ऐसा जाएगा एंड जो रेमस है इधर नीचे, वो रेमस ऐसे जाएगा नीचे. यू आर गेटिंग इट? दिस इज द मैंडिबल, दिस इज द लैटरल टेरिगॉइड इंसर्शन. दोनों साइड के लैटरल टेरिगॉइड्स मेरे हैं. इसको रेमस को आगे खींचते हैं. ओपनिंग ऑफ द माउथ. सो अमॉन्ग्स द 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन this opens, but it is also assisted by mylohyoid, digastric and gynohyoid. They also open the mouth. देखो वो हायोइड से अटैच होके मैंडिबल, देखो हायोइड से मैंडिबल जा रहे, जीनोहायोइड माइलोहायोइड. ओके तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हायोइड स्टेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंडिबल को नीचे खींचेंगे. जीनोहायोइड माइलोहायोइड. डाइगैस्ट्रिक कभी खींचेगा रचना, वो हायोइड को अटैच. डाइगैस्ट्रिक एंटीरियर बिलिया ऐसा है, हायोइड जब स्टेबल है तो डाइगैस्ट्रिक मैंडिबल को नीचे खींचेगा. ओके जब मैंडिबल स्टेबल है तो हायोइड को ऊपर खींचेगा. सी डाइगैस्ट्रिक रन्स लाइक दिस, गेट्स अटैच्ड टू हायोइड एंड गोज बिहाइंड. is taking from the mandible origin. हायोइड स्टेबल है, इसको ऐसे खींचेगा मैंडिबल को नीचे. मैंडिबल स्टेबल है, हायोइड को ऊपर खींचेगा. इसका एक क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. पानी पीते हैं हम लोग तो पहले मुंह खोलते हैं ऐसे आ, तो वो डाइजेस्टिक इज यूज्ड फॉर ओपनिंग. नाउ व्हेन वी आर swallowing, digastric has to elevate the hyoid. Why it has to elevate the hyoid? Because attached to hyoid is larynx. Epiglottis. Epiglottis जिसके बारे में आपको स्कूल में पढ़ाया था कि ये एपिग्लोटिस ऐसा है, लैरिंग्स ऐसा है. जब हम पानी पीते, खाना खाते, वो चाके बंद करता है. ये गलत सेमी है. एपिग्लोटिस उन काम न करने वाले कर्मचारियों में से एक है जिसके पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन काम ही नहीं करने. या उन बच्चों में से एक है जो बहुत इंटेलिजेंट है और पढ़ते नहीं. आपके बारे में भी आपके फादर मदर ने कभी बोला ना, बहुत ब्रिलियंट, खाली हार्डवर्क मिसिंग. आप में नहीं, बट हम लोग वो कैटेगरी के बहुत करेंगे. ब्रिलियंट चाइल्ड, बट स्कूल मीटिंग्स में, पेरेंट टीचर मीटिंग में, बट एफर्ट नहीं डालते. एपिग्लोटिस एफर्ट मतलब वो
तो लैरिंग्स क्या करता है, बोलता बाबा तू नहीं हिल रहा है, मैं ही जंप मारता हूँ एवरी टाइम. तो यू पुट योर हैंड हियर ऑन द लैरिंग्स एंड स्वॉलो. विथ एवरी स्वॉलो वो जंप मारते हैं. सो नाउ देर आर 2 एक्शंस. आप पानी पी रहे हैं तो पहला तो डायगेस्ट्रिक तो भी हायर्ड स्टेबल है. फिर आपने पानी मुंह के अंदर लिया, मुंह बंद किया, नाउ मैंडिबल इज स्टेबल. सो नाउ व्हाइल swallowing that water, the hyoid is pulled up, along with that the larynx is pulled up. Therefore this technique of drinking something with open mouth is very difficult. कुछ लोगों को ही आता है वो जो लोग पीते हैं, बहुत कम लोगों को आता है. मतलब वो डाइजेस्टिक बेचारा उसका. Otherwise normal people what they do, they open their mouth, drink water, take in water, close their mouth, drink water. This is normal. आप नॉर्मल हो. और जो ऐसा ऐसा करके हीरोपंती कर रहा है वो एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल. बिल्कुल ऐसा डिप्रेशन मत लो कि मेरे को पी बिल्कुल ऐसे मन में मत डालो कि यार मेरे को वो नहीं जमता है, वो सलमान खान और ये डर के आगे जीत है वो करते हैं, वो मेरे को नहीं होता है. मैं क्या करता हूँ, वो कोला लेता हूँ, ऐसा करता हूँ पीता हूँ, ऐसा करता हूँ पीता हूँ, ऐसा करता हूँ पीता हूँ. दैट इज नॉट. Okay. It has one additional head coming from the greater wing of sphinx. One additional head coming from the greater wing of sphinx. तो मतलब उसके 2 हेड है. हो एक हेड ऐसा है और दूसरा हेड ऐसा ऊपर से आ रहा है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनक्स. तो दोनों हेड के बीच में एक जगह भी है, यहाँ से मैक्सिलरी आर्टरी बहुत बार अंदर जाती है. Lateral pterygoid is the key muscle of the infratemporal fossa. तो उसके नीचे से नर्व्स आते हैं, ऊपर से नर्व्स आते हैं, नीचे से नर्व आती है, लिंगुअल नर्व आती है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व आती है, ऊपर से ऐसे टेम्पोरल नर्व, मेसेंटेरिक नर्व, बीच में से आर्टरी जाती है, मैक्सिलरी आर्टरी. मैक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय लैटरल टेरिकॉइड. पार्ट प्रॉक्सिमल टू लैटरल टेरिकॉइड, ऑन द लैटरल टेरिकॉइड एंड बियॉन्ड द लैटरल टेरिकॉइड. ऐसा. ओके. देन देयर इज मीडियल टेरिकॉइड. वो भी यहाँ से ही ओरिजिन लेगा, लैटरल टेरिकॉइड प्लेट के मीडियल सरफेस से. बट उसका फाइबर डायरेक्शंस, मीडियल टेरिकॉइड का फाइबर डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली सेम लाइक मैसेटर. मैसेटर इज ऑन द आउटर साइड लाइक दिस, मीडियल टेरिकॉइड इज ऑन द इनर साइड. दोनों के आप देखोगे, देखो ये भी ऐसा, ये भी ऐसा. ओनली डिफरेंस, मैसेटर इज ऑन आउटर साइड, मीडियल टेरिकॉइड ऑन इनर साइड. This has additional head from tuberosity of maxilla. दोनों के additional heads हैं. Medial pterygoid has an additional head. Medial pterygoid will elevate. Medial pterygoid and lateral pterygoid together have one common action. तुम्हाला दिसत नाही ना? कधी सांगणार? फी भरली आहे ना? का नाही भरली? मग बोलायचं ना? Medial pterygoid and lateral pterygoid have one more common action, and that is protraction of the mandible. Protraction. दोनों मिलके प्रोट्रैक्शन करते हैं. तो देखो खाना खाते समय राइट साइड का प्रोट्रैक्शन होगा, लेफ्ट साइड का रिट्रैक्शन होगा टेम्पोरलिस. फिर इस साइड का प्रोट्रैक्शन होगा, मीडियल टेरिकॉइड लैटरल टेरिकॉइड. इस साइड का रिट्रैक्शन होगा. दैट वे. And now to the humera. Humera. Which muscle causes retraction of the mandible? बाजूची मुलगी. बाजूची मुलगी. बाजूची मुलगी. Horizontal fibers of temporalis. What do the vertical fibers of temporalis do? Elevation of sit. So these are the 4 muscles of mastication. Now here in
the माझ्यानंतर कोणाचं लेक्चर आहे? Now here in the infratemporal fossa is a very important nerve, and that is the mandibular nerve. Mandibular nerve के पास जाने से पहले I want to tell you how you are going to dissect this. इधर पहली बार नेक्स्ट डिसेक्शन में आपको छन्नी लेके नेक्स्ट टू नेक्स्ट शायद ट्यूसडे को छन्नी लेके हथौड़ी लेके you will have to break the zygomatic process first, or then you will have to peel off the masseter like this. Then you will see the temporalis यहाँ पे. Then cut the coronoid process, peel the temporalis above, and then break the mandible. धीरे 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 ऐसे ब्रेक करोगे तो उसके अंदर ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा तो आपको दिखेगा. This is the mandibular nerve, a branch of trigeminal. Trigeminal has three branches: ophthalmic, maxillary and maxillary के branches आपको दिखेंगे टेरिगोपैलेटाइन फोसा में. ophthalmic के branches यहाँ पे. See how you remember the nerve supply of the face. You put your one finger on the angle of the eye, one finger on the angle of mouth. Above this finger is the nerve supply of ophthalmic. Between these two fingers is maxillary. Below this finger is mandibular. ये दो फिंगर के बीच में maxillary. ये एरिया maxillary से. ये फिंगर के above ophthalmic. ये फिंगर के below ophthalmic. This tip of the nose. Philtrum. Actually, philtrum should be by ophthalmic. It is formed. Whatever is formed by the maxillary process is maxillary, mandibular process is mandibular, and the frontonasal process, you will study the face embryology, that forms the philtrum actually, but maxillary arch overgrows, therefore this entire upper lip is by maxillary now. Supraorbital, supratrochlear, infratrochlear, external nasal, lacrimal, ऐसे उसके branches हैं, 5 branches. Now this is the mandibular nerve coming out of foramen. उबरा काय नाव तुझं? हाँ, निवेदिता जोशी कोण आहे माहिती का तुला? धनंजय माने इथेच राहतात. Nivedita, mandibular nerve comes out of the skull. From which foramen? 2. नाव काय तुझं? राहुल. It comes out of which foramen? दोषी. फोरामेन. आपका नाम क्या है? हाँ, काय? कृष्णा. फोरामेन का नाम क्या है? फोरामेन ओवेल. कृष्णा खड़े रहो. और ओवेल के पीछे एक फोरामेन होता है, उसका नाम क्या है? हाँ हाँ, स्पाइनोसम. फोरामेन स्पाइनल. So this is oval, this is spinosum. बसा खाली. This is mandibular nerve, and from its trunk, it divides into anterior and posterior divisions. Anterior and posterior division. From its trunk, 2 branches arise. The first branch is nervus spinosus, which goes inside through the foramen spinosum and supplies the meninges in the middle cranial fossa.
सो ये एग्जाम में पूछते हैं, meninges in the middle cranial fossa are supplied by the meningeal branch of the mandibular which is called as nervus spinosus. ये पीजी एंट्रेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है, nervus spinosus. ओके, जरा पॉज कर. So from the trunk arises nervus spinosus. Mandibular nerve. In the introduction you say this is the nerve of first pharyngeal arch. Nerve of second pharyngeal arch is facial. Third is glossopharyngeal. First is mandibular. There are 8 muscles which develop from the first arch. 8 muscles. Out of these 4 are the muscles of mastication. 4 are muscles of mastication. The remaining 4 are tensor palatii, tensor tympani. Tensor palatii, tensor tympani, anterior belly of digastric. Anterior belly of digastric. And मिडल ईयर में कौन से मसल्स होते हैं? एक होता है स्टैपेडियस, दूसरा कौन सा होता है? टेंसर टिम्पैनी. टेंसर टिम्पैनी, टेंसर पैलेटी, एंटीरियर belly of digastric and mylohyoid. Let me just check whether it is mylohyoid, the 4th one. Okay. Now from the trunk there is nerve to medial pterygoid. Nerve to medial pterygoid. Nerve to medial pterygoid. This nerve to medial pterygoid also supplies TP. Now tensor tympani and tensor palatii. सायली इकडे लक्ष दे, तू मला मदत करायचा प्रयत्न करतेस, मला कळलं. हा, कुठे mylohyoid. Anterior branch is mostly muscular, posterior branch or motor, posterior is mostly sensory. So anterior branch will give nerve to lateral pterygoid. It will give temporal branches, deep temporal branches. It will give masseteric branches. So जो 4 मसल्स मैस्टिकेशन के हैं उसमें से 3 are supplied by anterior branch. 1 is supplied from the trunk. Anterior branch we said is motor. तो ये सब मोटर को सप्लाई करके it continues as buccal nerve which is sensory. Buccal nerve which is sensory. Buccal nerve which is sensory. कळलं? Now posterior. Posterior is mostly sensory. उसमें से एक नर्व का नाम आपने ऑलरेडी सुना है, वो है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. Auriculotemporal nerve. This supplies the ear. Saloni, apart from supplying the ear, it also supplies ती मुलगी मृणाली नाही अजून. apart from supplying the ear, anybody? It carries the postganglionic fibers for the parotid gland. ओटिक गैंग्लियन से जो फाइबर्स जाते हैं वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड पैरोटिड. हमने कल देखा ना, इंफ्रा
inferior salivatory nucleus, glossopharyngeal nerve, tympanic branch, tympanic plexus, lesser petrosal nerve, otic ganglion. otic ganglion के बाद पलट 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 है ना, ऑरिकुलर टेम्पोरल नाउ, यही वही है ऑरिकुलर टेम्पोरल. ओके, नाउ टू मोर सेंसरी ब्रांचेस. ये एक सेंसरी है, दूसरा सेंसरी है लिंगुअल. क्या है? लिंगुअल नाउ. लिंगुअल नाउ इज general sensations of the anterior two-third of the tongue. Lingual, नाम ही lingual, sensory to anterior two-third of tongue. और ये lingual को यहाँ पे कुछ तो ज्वाइन कर रहा. सीटी कॉर्डा टिम्पैनी. जो फेशियल नाउ हमने सीखा ना, उसमें कॉर्डा टिम्पैनी था, वो इतना चिंटू सा है. इट इज फॉर द स्पेशल सेंसेशंस ऑफ द टंग. The taste of the tongue anterior to third is by chorda tympani. General sensation, hot cold, not the taste, is by lingual. Hot cold is by lingual. Taste, sweet sour is by chorda tympani. So chorda tympani joins lingual. Chorda tympani is carrying the fibers for taste of anterior two-third of tongue and submandibular and sublingual gland के फाइबर्स, सिक्रेटोमोटर फाइबर्स. मतलब आप अगर यहाँ पे आगे जाओगे ना, तो आपको ऐसे लिंगुअल पे एक ऐसा स्वेलिंग दिखेगा, दैट इज द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. और वहाँ से सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर चाहिए. तो ये अगर हम ट्रेस करेंगे कॉर्डा टिम्पैनी, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, नर्वस इंटरमीडियस, 7th cranial nerve, chorda tympani joins lingual, submandibular ganglion, submandibular gland. पैरोटिड का कैसा जा रहा था? बोलो चलो, पैरोटिड का कैसे जा रहा था? inferior salivatory nucleus, glossopharyngeal nerve, tympanic branch, tympanic plexus, lesser petrosal nerve, otic ganglion, auriculotemporal nerve, parotid. Submandibular gland का कैसे जा रहा है? superior salivatory nucleus, nervous intermedius, directly 7th nerve नहीं बोलना, 7th cranial nerve, then chorda tympani joins lingual, then submandibular ganglion, then सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ठाकरे ना शेवट. हां, टेन्शन नका घेऊ. हे मी तुमच्याकडनं 10 वेळा रिवाइज करून घेणार आहे हेड नेक फेस संपेपर्यंत. इसमें मैंने एक लेक्चर भी रखा है खास, सीमा मैडम का. मतलब वो तो आपसे हैमर करा के, वो बाय हार्ट करा के ही आपको छोड़ेगी. ओके, सो यू विल बी डन विद दिस. ऐसे और दो है. One is for ciliary ganglion and one is for pterygopalatal ganglion. As of now, let us focus on ये easy वाले दो. You got it? Lingual. So posterior के 3 branches है. पहला क्या है? auriculotemporal. ये देखो, अगर देखो, एक समझो चीज, ये अगर डैमेज हो गया है ना, तो सलाइवेशन ही पूरा बंद हो जाएगा. ऑरिकोटेम्पोरल लेके जाती है पैरोटिड को, और ये जाती है सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल, कॉर्डा टिम्पैनी जॉइनिंग लिंगुअल. नाउ द लास्ट ब्रांच इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. क्या नाम है इसका? इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. वे ऐसे जाती है, इट एंटर्स द फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन, और मैंडिबल में पूरे लोअर टीथ को सप्लाई करते हैं. मैंडिबुलर फोरामेन में एंट्री करते हैं, यहाँ से मेंटल नर्व करके बाहर आती है. शुभांगी मैडम आई क्या? देखो, उसके बाद किसका लेक्चर है? उसके बाद 2 घंटे. हाँ, शुभांगी मैम को बोला 9:15.
She can come at 9, 10, 9:15 ऐसा. हाँ, किधर है हम लोग? तो जो डेंटिस्ट लोग है ना, डेंटिस्ट, when they want to do a procedure on the lower teeth, they feel for the lingula of the mandible और उसके अराउंड एनेस्थेटिक फ्लूइड देते हैं, तो ये नर्व एनेस्थेटाइज होती है. फिर पूरे लोअर टीथ आ गए मैडम, तो वो पूरे लोअर टीथ पे हम जो चाहे कर सकते. फिर वो जो करते हैं, कितने लोगों ने डेंटल प्रोसीजर किया है? रूट कनाल, लोअर टीथ, अप्पर टीथ. तू नाराज झाली का बाळा? हळूहळू मागे चालली, खिडकीत बसशील पाठीमागून. असं नाही, एवढं नाही चिडायचं माझ्यावर. ओके, दिस इज क्लियर. mandibular now before giving this branch it gives a motor. जैसे इसमें सब सेंसरी थे, सब मोटर थे, एक सेंसरी था. इसमें सारे सेंसरी, एक मोटर है. इट गिव्स नर्व टू माइलोहायोइड which also supplies anterior belly of digastric. Anterior belly of digastric. Which also supplies anterior belly of digastric. Okay. तो देखा आपने 4 मसल्स, मैस्टिकेशन के 4 मसल्स बाकी. टेंसर टिम्पैनी, टेंसर पैलेटी, माइलोहायोइड, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक. हाँ, इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी है, टीएम जॉइंट है. टीएम जॉइंट इज बाइकॉन्डाइलर जॉइंट, उसमें डिस्क होता है, उसमें देयर इज अ डिस्क. वो डिस्क होने के कारण इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट. व्हाई देयर इज अ डिस्क? बिकॉज दिस प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन is a sliding movement below the disc. मतलब डिस्क और वो हेड साथ में मूव होता है ऐसे. And opening of the mouth and closing of the mouth is, it happens with head moving below the disc. Opening, closing. Protractor and retraction में head and disc दे ऐसे move. तो wide opening में क्या होता है? कभी-कभी mandible dislocate होके. So normally when we open our mouth, the head moves below the disc of the TM joint. We still open wide, so then head moves below the disc and head and the disc move together. It becomes further wide. If you make it further wide, मतलब मैगडी छोड़ के आप सबवे में गए, अरे टुकड़ा टुकड़ा खाओ ना यार, बट आपको दिखाने का ना वो कैसा कोला पीते हैं, ये कैसा. Now first thing, head move below the disc. Further opening, head and disc move together. Further opening, head further moves below the disc. Further opening, head slips. Head slips from its articular surface and comes to line the infratemporal fossa. Patient comes to the casualty like this. What is the first step? First step is to remove the burger. वो बर्गर के साथ आएगा, वो किसी को. Then put your gloves. This is a standard procedure. Put your gloves, put your fingers at the angle, thumb on the molars, lower molars. ये एग्जाम में भी पूछते, thumb on the lower molars. So what has happened? It got dislocated and come here. So you push the mandible down, then back and up, down, back and up. But first step is to, ऐसे एग्जाम में मत लिखो. हमारे एग्जामिनर ऐसे हमको बोलते थे, तो क्या बर्गर ऐसे ही रखेगा और काम करेगा? हम लोग को क्या झापने का काम रहता. ओके, चालू करा था. लास्ट 6 मिनट्स. ये थोड़े से डिफिकल्ट चीज़ें हैं, मैं आपको वापस इसको रिवाइज करा रहा हूँ.
तो रिवाइज कराते कराते मेरा भी 3 मिनट का वीडियो होता है, आपका भी रिविजन होता है, विन विन सिच्युएशन. हे पहिल्यांदा घे, नाही हे पहिल्यांदा घे, चल ठीक आहे. 1, 2, 3, start. So mandibular nerve is the nerve of the first arch. This nerve supplies 8 muscles which develop from the first branchial arch. Mandibular nerve comes out of foramen ovale. From its trunk 2 branches are given. One is nervus spinosus which goes from foramen spinosum and supplies the meninges of the middle cranial fossa. Second is nerve to medial pterygoid which also supplies tensor palatii and tensor tympani. Then it divides into anterior and posterior branches. Anterior is mostly motor except for one branch, that is buccal, which is sensory. The motor branches are the deep temporal nerve supplying the temporalis, the lateral pterygoid, nerve to lateral pterygoid, and nerve to masseteric branches. Posterior branch is mostly sensory. Of course, the anterior continues down as buccal, which supplies the buccal nerve. Posterior is mostly sensory except for one motor branch. It gives lingual, chorda tympani joins lingual meant for general sensations of anterior 2/3 of tongue, hot or cold. But because chorda tympani joins it, it takes care of the taste of the anterior 2/3. Also, there is a submandibular ganglion attached to lingual, which you will see in dissection, through which the submandibular gland is supplied. The inferior alveolar auriculotemporal nerve is another sensory branch. Otic ganglion fibers from auriculotemporal go to parotid, but otherwise auriculotemporal supplies the skin on the upper part of the earlobe. The third sensory branch is inferior alveolar nerve, which enters to the mandibular foramen and supplies all the teeth on the lower side. So both, there will be 2 inferior alveolar nerve which supply our lower teeth. It comes out as mental nerve over here. But before entering the mandibular foramen, it gives nerve to mylohyoid, which also supplies the anterior belly of digastric. So this is the mandibular nerve. Thank you. चालू करो. खुद का लैपटॉप है, लेके आओ, वो लैपटॉप लेके आओ, ये चालू करो. स्टार्ट. So 4 muscles of mastication. All of them don't lie in the infratemporal fossa. Some part of it may lie, but exclusively it is the pterygoids which lie in the infratemporal fossa. Temporalis lies in the temporal fossa. Insertion is in the infratemporal fossa. Temporalis from the temporal fossa gets inserted on the ramus of the mandible. Vertical fibers elevate the mandible. Horizontal fibers retract the mandible. Then there is masseter arising from the zygoma. Insertion on the external part of the angle of the mandible, elevation of the mandible. These are the 2 pterygoids. The 2 pterygoids both arise from the lateral pterygoid plate. Lateral pterygoid from lateral surface, medial pterygoid from the medial surface. Lateral pterygoid gets additional head from the infratemporal crest of the lateral wing of sphenoid. Insertion is on below the head, the pterygoid fovea, which is there below the head of the mandible. So it pulls the head like this, so opens the mandible. Amongst these 4 muscles of mastication, lateral pterygoid is the only one which opens. Other muscles opening are digastric, mylohyoid and gynohyoid. Then there is medial pterygoid, which takes origin from the medial surface of the medial pterygoid plate and tuberosity of maxilla. It gets inserted similar to masseter, but on the inner side of the angle of the mandible. Its action is elevation and protrusion along with lateral pterygoid. Okay, so that means if the TM joint is asked, which is bicondylar joint, has a disc, has only 4 ligaments. One is capsule, another is lateral temporomandibular ligament. 2 other ligaments you know, stylomandibular you know, sphenomandibular you know. Okay, then there are movements. What are the movements at the TM joint? Depression caused by lateral pterygoid and digastric mylohyoid. Elevation caused by temporalis, anterior fibers, also slightly helped by this masset, but not, mainly temporal. Protraction caused by medial and lateral pterygoid. Retraction caused by horizontal fibers of temporalis. Side to side chewing, one side medial pterygoid, lateral pterygoid contracts,
brings protrusion, other side से retraction. आज खाना खाते समय इन सब को याद करो. Thank you so much.